Any similarities, any differences between RJ and Warren Buffett? Because I think a lot of people used to compare him or say that he's the Warren Buffett of India. He was. So any specific similarities or differences you found out between the two of them? So I think one similarity would be that they both stuck to businesses that they understood. Warren Buffett, of course, later on bought Apple, and that was a sort of change in his philosophy. I think difference-wise, I don't know if RJ ever sat on large cash positions. I mean, today everyone talks about Warren Buffett's massive, it's more than his listed portfolio now. Yeah, correct. But I think they were similar in the way that, they were naturally very bullish. They both used to always say कि यार हमने एक ओवेरियन लॉटरी जीती है, मतलब by being born in America और by being born in India, उन्होंने एक लॉटरी जीती है क्योंकि ये बहुत अच्छा मार्केट है टू इन्वेस्ट इन. बाकी जैसे नील भाई ने बोला कि जो समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करो. अभी फॉर एग्जांपल वॉरेन बुफे ने सीज कैंडीज में इन्वेस्ट किया है, कोक में इन्वेस्ट किया है, एप्पल में बहुत बाद में इन्वेस्ट किया है. तो वैसे राकेश झुंझुनवाला जी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया, क्रिसिल में इन्वेस्ट किया, लुपिन में इन्वेस्ट किया. जो दिखता था उनके आगे, जो DHFL में इन्वेस्ट किया, जो उनकी आंखों के सामने था, जिनके मैनेजमेंट से वो मिले थे, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और बहुत बड़े तरीके से इन्वेस्ट किया. और दोनों काफी वोकल, दोनों काफी वोकल है. वॉरेन बुफे भी काफी वोकल है, मिस्टर झुंझुनवाला इज ऑफ कोर्स वेरी वोकल, राइट, वाज वेरी वोकल. तो आई थिंक काफी सिमिलरिटीज है. जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू ऐड टू नील्स आंसर इज की जैसे मिस्टर बुफे ने एप्पल में इन्वेस्ट किया, आई थिंक आरजे आल्सो वांटेड टू गेट इनटू न्यू एज कंपनीज, क्योंकि उन्होंने भी नजारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया, व्हिच इज अ गेमिंग कंपनी, है ना. तो So later on he also departed from that tech wala. हाँ, थोड़ा सा उन्होंने भी डिविएशन लिया. मे बी ही वाज वांटेड टू चेंज विद टाइम. उनको कहने का लगता होगा कि मैंने लास्ट .com बबल मिस किया. तो even IKS for that matter, which is now exactly posthumously his largest position. In fact that is also a tech company na. Is a tech company. And unfortunately he is not there to see it, है ना. मतलब 15,000 करोड़ की होल्डिंग इन 17 साल, मतलब so at IPO that company was a 350-370x for them, and at current market price it's like a 430 or 420x for them. Wow. तो आप सोचो. Yeah, that's a lot. And unfortunately he's not there to see it. मतलब for him it would have been such a big event, 40 साल की holding being dwarfed by a 17-18-year-old holding. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.